जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्ग। आज हमारा बहुत गहरी सब्जेक्ट है। कंग्रेचुलेशंस टू यू and every one of the people who are watching. Aditya L1, okay, launched very successfully. भारत का जो आज का तारीख में पीएम मोदी जो बना रहे हैं इसरो के द्वारा भारत को पूरा ये स्पेस में एक लीडर बनने वाला है। We are going to talk about Aditya L1 and a successful launch. उसका मतलब क्या है, पॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है और टेक्निकली क्या है। और उसके अलावा do you know there is a Chandrayaan 4 coming? Man, ISRO is going bum 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 bum, non-stop. It's going to be so incredible for you. Why? We are also going to see क्यों जो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं वो इतना चिंतित क्यों हो गए। अचानक वो रेसिस्ट अटैक कर रहे हैं। ब्रिटेन में देखे तो वो बोलते हैं भारत के लिए ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इनका इतना कैपेबिलिटी है। तो ये लोग अभी अभी रेसिस्ट अटैक को चालू हो गए। इसका मतलब ये है कि वो बहुत चिंतित हैं। वो क्यों, उसके बारे में देखा जाएगा। और हमारा साथ जुड़े हैं वैष्णवी। Thank you, Vaishnavi, for joining us and welcome to Bharat Marg. And just give a minute and we will invite you to discuss all about Aditya and Chandrayaan 4 and how PM Modi बना रहे हैं भारत को स्पेस का लीडर, जिसके बारे में हमारा बातचीत होगा। But before going further, friends, please make sure to like the video and also comment on the video. Okay, and share the video with as many people. क्यों है कि आपके मदद के द्वारा ही हम ज्यादातर लोगों को पहुंच पाएंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करें। और अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल भारत मार्ग को, और आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फ्रेंड्स टू मेक श्योर यू गेट नोटिफाइड। जब भी हम लाइव में जाते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, वो भी हेडिंग के साथ आता है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा तो आप आ सकेंगे, कोई सवाल है तो पूछ सकेंगे, कॉन्वर्सेशन में भाग ले सकेंगे। एंड ऑल्सो डू यू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड वन धार्मिक मैसेज नाउ। आपको आपका मोबाइल फोन में आएगा व्हाट्सएप के द्वारा। अगर आपको इंटरेस्ट है, कोई भी भाषा में आपको चाहिए, बहुत सारा भाषा में अपना सपोर्ट सिस्टम मिलती है। अगर आपको कोई भी भाषा में एक धार्मिक मैसेज चाहिए, आप हमें संपर्क कीजिएगा अपना व्हाट्सएप नंबर में +16479644790 एंड विथ योर नेम, वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट लैंग्वेज यू वांट, एंड बूम, नाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ सनातन धर्मा and its roots. Okay, and lot of stories and other thing comes which you can share with your family, friends, and kids, especially children. Okay, but anyway, welcome Vaishnavi. Thank you for joining Bharat Marg. And ये बोलिए कि आज हमारा चर्चा है आदित्य L1. Congratulations to you, वैष्णवी। बिग डे भारत के लिए। आदित्य L1 का लॉन्च हो गया। पीएम मोदी तो कमाल कर रहे हैं। आदित्य L1 का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये बताइएगा जरा। Okay, Aditya L1. Aditya means the sun, and this mission is supposed to go and research about the sun, a lot of different details about the sun. L1 means Lagrange point. This is where it's really stable because the gravitational pull isn't like, it gets neutralized in the Lagrange point. So the Lagrange point is a really good area for satellites, etc., orbital devices to go and land का मतलब क्या है? उधर जाने में गिरता नहीं है क्या? ऐसा है क्या? फ्यूल कम पड़ता है, क्या होता है? Absolutely. No, it doesn't fall. It doesn't get that affected by the gravitational pull of the sun, etc., sun and earth. So it's basically that one point where it's very stable. That area is very stable because like the forces from the sun and earth, they both get neutralized in the Lagrange point, which is why Aditya has decided to go there. And it's also why it's called Aditya L1 instead of just Aditya, because L1 meaning the first Lagrange point. Can you remove your headset? It's cutting off basically, or whatever, right? Yeah. Okay. If you can. Yeah, please go ahead. Yeah. I'll try. Give me 1 second. Yeah.
What about now? Is my voice okay now? Yes, yes. Go ahead. Thank you. Yeah. So Aditya L1, that's why it's named that, because Aditya meaning the sun, and this is a mission for the sun. L1 meaning the first Lagrange point, which is one of the 5 points. It's the first out of the 5 points where the forces of the Earth and Sun get neutralized pretty much. So there isn't that big of a problem to go land there. अच्छा, तो ये लैग्रांज पॉइंट ये जो है L1 उधर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस्ड होता है, इसलिए उधर जाके ये सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है ताकि उनका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाए। और ये भी सही है कि उधर से ये उधर सोलर एक्लिप्स नहीं होती है, दिखती है कम से कम। Yeah. कैन यू Yeah. से अबाउट इट? It's not visible. Solar eclipses aren't visible at that point in Lagrange points. अच्छा, That is true. और हाँ, yeah, it's a great thing, friends. आपको ये जान के खुशी होगा कि आज भारत का समय 11:50 में ऑन द सैटरडे, ओके, नो रेस्ट फ्रेंड्स। आपको ये समझना पड़ेगा, इसरो ने अभी विश्राम भी नहीं किया। कल वो सारे लोग थे बालाजी का दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और गेस व्हाट फ्रेंड्स, टुडे आज जब उनका लॉन्च हो गया आदित्य और ये सक्सेसफुली हुआ, ये हुआ है फ्रॉम सतीश धवन दिस थिंग स्पेस सेंटर in श्रीहरिकोटा, ओके। एंड सो ये कितना दूर में है, कितना समय लगता है जाने के लिए, और कुछ जानकारी दे पाएंगे वैष्णवी जी इसके लिए? Okay, so the designated point where this is supposed to land, if everything goes well, this is the point where it will land, which is the first Lagrange point. It's about 1.5 million kilometers away from the Earth. Mm-hmm. At least it's like 1.5, around that range. And it's about 148.5 million kilometers away from the sun. This is the first point. And it should take about 128 days on Earth count. That's 128 days for the Wow. Aditya L1 to reach the first Lagrange point, which is around 4 months. Wow. Mhm. Wow. So what is this? ये जाके क्या करेगा आदित्य L1? जाके उधर जाके क्या करेगा? क्या फोटो लेगा? क्या इनका मकसद क्या है? Just a person like me can understand. So Aditya L1 has a lot of different reasons why it's going. The main gist of it is that Aditya L1 is going to do research about the sun. And basically what it's going to do, it's going to observe the different layers of the sun, first 3 more specifically, and it'll give photos, etc., about these 3 layers, which can be used for studies, experiments, etc., in the future, in the possible future. And its main reason is to study the upper solar atmosphere on the top of the sun. It's going to mainly study that. It's going to study the temperature, velocity, density, etc., all these details about the sun. And there are a few things in science which haven't been yet understood, as in how the sun's radiation fully affects the Earth's atmosphere. Like, on a very basic level, it's been understood, but on a more deeper level, this hasn't really been understood yet as to how it completely affects the Earth's atmosphere. There are a lot of things that the sun's radiation does, which haven't been fully explored yet. So Aditya L1 the aim of Aditya L1 is to also go and answer that question as to what the sun's radiation actually does to the Earth's atmosphere. Wow. And there's also one more thing, is that the top portion of the sun is about 1.8 million degrees Fahrenheit, while the lower portion is around 10,340 degrees. So why are the two portions of the sun, the top and lower, the top portion and then the lower portion, why are they so different? This hasn't been really understood yet. It's said that this is the case, but there isn't really anything to say why this happens. It just it's said that this happens, but there's no real there's evidence to prove it, but there isn't any reason as to why this happens, which has been found out yet. Nothing has been found out about why this happens. So Aditya L1 is also supposed to go research about this and bring answers back as to why this happens. And these are 2 unanswered questions in science which Aditya L1 is supposed to go and bring answers to. Wow. मैं और भी बात आपको I will bring it to your attention friends
ये क्या है, ये देखना है कि पीएम मोदी ने जो घोषणा किए मेक इन इंडिया, उसके द्वारा बनाया गया आदित्य L1। क्यों वर्ल्ड चिंतित है? इसलिए भी क्योंकि ये जो इसका बजट देखिएगा आप, ओके, ये बहुत 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 गहरी बात है। इसका बजट, आदित्य L1 का बजट जो है वो चंद्रयान 3 से कम है, ओके, जो मून के लिए गया हुआ है उससे कम है, ओके। और 424 फ्रेंड्स, 424 मतलब क्या है मालूम है क्या आपको? ये जो प्रभास का मूवी आया था अभी, प्रभास का मूवी, जो ये जो राम जी को, रावण को बनाया, क्या है वो, खिलजी जैसा, हनुमान जी को लेदर में बना के, ये सब बना के, वो जो उल्लू, लोगों को उल्लू बनाने का वो पिक्चर आया था, उसका प्रोडक्शन कास्ट से कम वो है, उसका प्रोडक्शन है 650 करोड़ फ्रेंड्स, ओके। और सोलर मिशन का कास्ट है 424 करोड़, दैट इज 570 मिलियन, ओके। ये देखिएगा, ये वर्ल्ड का जो भी है इससे 2 गुना होता है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी छोटा छोटा देश जो हैं, जो सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, उनका बहुत गहरी मार्केट हो रहा है भारत, ओके। तो इसलिए स्पेस, इस इतना दिन तक स्पेस सिर्फ रिसर्च का मैटर रहा, मगर मोदी जी ने उसको बिजनेस के लेवल पे लेके आए, ताकि ऑलरेडी यू नो वन थिंग, ये हुआ है 1 साल पहले, एक रॉकेट में ओके 96 सैटेलाइट्स वेंट अप, 96 satellite to cut the cost, okay, 96 सैटेलाइट्स ऊपर गया। ये बहुत गहरी बात है, इसलिए है कि इसमें मेक इन इंडिया है और बजट इंडिया है, और रिसर्च कैसा करना है, कैसा कम बजट में करना है, और इसके वजह से ये दुनिया को भारत अभी प्रूव कर चुका है कि ये अगर आपको स्पेस में जाना है तो भारत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपको सस्ता में जाएंगे, आप जरूर जाएंगे, और ये इट इज प्रूवन वी आर विक्टोरियस। अभी अभी अगर आप देखते हैं तो ये भारत का कहानी जो है, ये जो सन में लैंडिंग हुआ पोलर, साउथ पोलर में, वो दुनिया में पहला कंट्री है, वह शिव शक्ति में जहां लैंड हुआ है, ओके। ये दुनिया में पहला कंट्री है वो साउथ पोलर में उतरने के लिए, और मून में उतरने का 4वां कंट्री है। और सोलर रिसर्च के लिए अभी तक सिर्फ सिर्फ 5 ही कंट्रियां जा चुके हैं, और उसमें एक है जापान। क्यों इसमें महत्व है? ओके, वैष्णवी, गिव मी मोर इंफॉर्मेशन। इसलिए ये महत्व है कि मैं ये बोल देता हूं कि अब ये सक्सेसफुल लॉन्च आदित्य होने के बाद, आदित्य L1 होने के बाद, उनका इसरो का जो चेयरमैन साहब हैं सोमनाथ जी, वो बधाई देते हुए अपने साइंटिस्टों को क्यों देना ही चाहिए, उनका मेहनती के लिए, उनका दिमाग वाला काम के लिए जरूर देना ही चाहिए। और वो बताए कि हम अभी सोने वाले नहीं हैं, अभी चंद्रयान 4 का लॉन्च होने वाला है जल्दी। और पता है, वैष्णवी विल एक्सप्लेन दिस मोर, मगर ये जापान के साथ कोलैबोरेशन में होने वाला है, जहां जापान is one of the topmost on the electronic items, and the research work, and it is getting it is joining hands with the leader of the space, which is Bharat. इसका मतलब क्या है? चंद्रयान 4 का मतलब क्या है? Means say some idea, Vaishnavi. Give us some idea. Chandrayaan 4, it's pretty much, Chandrayaan 3 is now figuring out that there's water, everything. It's basically Chandrayaan 3 is going and it's figuring out more details about the moon. So Chandrayaan 4 is supposed to use those details, and basically it's supposed to conclude whether it's possible for humans to go and live on the moon. Not whether life is currently on the moon, but whether it is possible to sustain life, human life,
अरे especially ये on the ये तो moon. बहुत अच्छी बात है। मेरा कुछ लोग हैं लिस्ट Mhm. में जिसको मैं भेजना चाहता हूँ, मून या मार्स जरूर भेज देंगे उनको। हाँ, प्लीज Yeah, कंटिन्यू। just send them. Just send या them. So yeah, तो that's basically what this is for, and it's supposed to be launched in around 2026. वाह, उसके अंदर अभी दूसरा मिशन जाने वाला है, 1.5 मिलियन से भी लंबा। ओके, आप देखेंगे इसका भी जानकारी आने वाला है। ये पीएम मोदी, आई एम सेइंग यू, यू नो, सी हियर, ये जो रेसिस्ट लोग हैं वेस्ट में, वो ऐसा कार्टून के उसके जाने के पहले मैं आपको कुछ इतिहास बताऊंगा। ओके, ये कांग्रेस का राज में 1965 में रॉकेट को लेके, ये स्पेस सैटेलाइट्स को लेके, रॉकेट को लेके ऐसा साइकिल में गया करते थे साइंटिस्ट लोग। ओके, 2014 में, क्योंकि जो नेतृत्व होता है उससे बहुत मतलब होता है। जो नेतृत्व, जब उसका एक्स चेयरमैन शिवम, मार्स का फेलियर हुआ उनका मिशन, कैसा मोदी जी ने उनको उनको उत्साह दिलाया, वो दुनिया देखा। ओके, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लीडर हैज एन इम्पैक्ट ऑन द मिशन। ओके, और देखिएगा ये 1965 में कैसा साइंटिस्ट का काम था, 2014 में कैसा था। ओके, ये देखने लायक है। और ये देखिए ये रेसिस्ट लोग क्या किए। ये जब मार्स का अपना अपना जो मिशन फेलियर हुआ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून रहा कि इंडियन मार्स मिशन, एक फार्मर अपना जो बफलो के साथ आके उधर कटकटा रहा है दरवाजा, क्योंकि गाय के साथ आके उधर कटकटा रहा है कि हम भी आ जाएं अंदर। हैं, ये सब मालिक लोग अंदर बैठे हैं। आज देखो, आज का स्थिति बिल्कुल अलग है। ये जो गोरे बोरे हैं वो आके अभी कटकटा रहे हैं अंदर आने के लिए। ओके, ये बहुत गहरी बात है, you know, and also lot of naysayers like this guy in Bharat who are ridiculing. See, this is from India today. You know, Chandrayaan 3 जाने के पहले ही उन्होंने लिख लिया कि चंद्रयान 3 अगर ये पहुंच नहीं पाया तो कैसा फेलियर होगा, क्या होगा। और ये प्रकाश राज जो है, ये अपने आप को जो बुद्धिमान समझता है, ये जैसा जो गद्दार लोग हैं। ओके, ये गद्दार लोग हैं, वो भारत का दुश्मन गद्दार जो भारत के अंदर हैं और जो भारत का दुश्मन बाहर हैं, ये सब अभी इनका मुंह बंद कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। Okay, यही बात है। and but it is such a exciting trip and wanted to congratulate. I am going to say, you friends, why the liberal, the George Soros gang. Okay, George Soros, the anti-Indian gang, the Chinese peddlers, the Chinese, the ones who lick the shoes of the Chinese and Americans. Okay, why they are so upset with Bharat success. I will do a separate video, so make sure to watch tomorrow's show. It is going to be very exciting because I will do some explosive thing on it. Okay, but friends, you make sure to watch it, and it's so congratulations. Join hands with us to congratulate all the scientists of ISRO for their incredible job. Not only us today, the whole world of the friends of Bharat are all proud of them. Thank you, Somnathji, to you and for your engineers. Okay, and thank you, Vaishnavi, for coming and sharing your views. Appreciate it highly, and looking forward to see you again shortly again. Okay, we will see you. Till then, you want to have a last word? Okay, No, Jai Shri Ram. what is that? I said Jai Shri Ram. Absolutely. You know, Jai Sri Krishna. We will see you in the next video. Till then, Jai Sri Krishna. Jai Sri Krishna.